So let's start the new chapter today, that is electric charges and fields. So first of all, I want to give you some basic definitions. Okay. What is electrostatics particularly? Electrostatics deals with study of forces, comma, fields and potentials arising from static charge. Static charge means what, Ray? The charge which is at rest. Okay, the charge which is at rest. What is the charge now? See here, first of all, what is the charge? Okay, what is charge? See here, charge is a property of matter. Charge is property of matter that produces and experiences electrical and magnetic effects. Electrical and magnetic effects. Okay, charge is property of matter that produces and experiences electrical and magnetic effects. Got it? Now, which will produce electric field, which will produce magnetic field, which will produce sometimes both electric field and magnetic field, as well as sometimes it emits radiation also. So see, I am giving you one box. If charge is at rest, charge is in motion or accelerated charge, then what it is giving? Listen carefully. If you have any doubt, you can ask. तो देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है और इसमें मैं ऐसे आपको 3 बॉक्स दूंगा, थोड़े से बड़े बड़े करेंगे, ठीक है? देखो, हो गया इक्वल? यस। अब सबसे पहला वाला मैं ले रहा हूं, चार्ज एट रेस्ट. Charge at rest means what? Charge is not in motion, its velocity is 0. Okay, then it will produce only electric field. What it will produce? Only electric field. If suppose moving charge is there, moving charge, what it will produce? It will produce electric as well as magnetic effect. Okay, what it will produce? Electric field as well as magnetic field. Electric and magnetic field. That's why you see current carrying conductor produces magnetic field. क्यों? क्योंकि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, इसका मतलब होता है चार्ज मूव हो रहा है. जब चार्ज मूव हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, due to the current flow, definitely there is a magnetic field around it.
Yes, got it my point. Next one, suppose accelerated charge is there. Accelerated charge. Accelerated charge means velocity is changing with constant rate, we can say. So if accelerated charge is there, then it produces electric field, also magnetic field, and it emits radiation also. Understood? It emits radiation also. So charge at rest produces only electric field, moving charge produces electric field as well as magnetic field, and accelerated charge gives electric field, magnetic field, and emits electromagnetic radiation. EM you can write here, electromagnetic radiation. Got it? Understood till here? Yes. Yes, sir. Note down fast. Very easy and nice chapter now from here onwards. Okay, very easy and interesting. Yes, finished everyone? Sir. No. Okay, finished? Answer. Right. Let's move ahead. Now, see, let's learn something about this atom. So, see here. See here. Now, atom. Can I say that atom is electrically neutral? Yes or no? Atom is electrically neutral. Yes or no? Agree with me, everyone? Why? Why? Because number of protons are always equal to number of electrons. Yes or no? I am talking about complete atom, not about nucleus. Nucleus is positively charged, but complete atom is negatively charged. Understood everyone? Is that clear? कोई शक कोई संदेह है तो बोलो. I am drawing diagram also for your convenience. See here. This is what nucleus suppose. And in the nucleus, there are Z number of protons. And around this, so many electrons are rotating. And obviously, number of protons is equal to number of electrons. Yes or no? And that's why atom is electrically neutral. Yes or no? Right? Okay, good. Now,
Now see, here. If suppose one body is there, if suppose one body is there, and suppose we have removed some electrons from it. If body loses some electrons, if body loses some electrons, what happens? Bolo. If body loses some electrons, deficiency creates excess positive charge, and body becomes positively charged. Body becomes positively charged. Right? Keep it in mind. If body loses some electrons, yes, very good. Body becomes positively charged. Similarly, if any body gains, बोलो बोलो क्या होगा? If body gains electrons, then body becomes, bolo, very good, negatively charged. If body gains electrons, it becomes negatively charged. It becomes negatively charged. Okay, right. Now tell me, as you are adding some of the electrons and as you are removing some electrons, what happens? See here, body loses electrons, becomes positively charged. Yes or no? Weight increases or decreases? Bolo bolo. Weight increases, decreases? Decreases. Very good. Why? Because some of electron left now, so that mass will also go off with them. Yes or no? Next, here body gains electron. Sir, your mic is off, sir. Sir, you are muted, sir. Okay. So body gains electron, negatively charged, and weight increases. Yes. This I explained. Yes, please tell me, this I explained. Yes, sir. This one, this point. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So body loses electron, it becomes positively charged and its weight decreases. Body gains electron, it becomes negatively charged, its weight increases. Why? Because some of the electrons are getting added. Each electron is having mass how much? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. That will go on increasing only after adding. As you are removing that mass, one electron mass will go on decreasing, and that's why body loses electron, positively charged, weight decreases. Body gains electron, negatively charged, weight increases. Understood? Is that clear? Clear? Yes, sir. Clear, sir. Good. So one more point I will add in a bracket here. You tell me who will lose electrons, ray? Body with lesser affinity, है कि नहीं? Yes, no. Here body gains electron. Which body will gain electron? Higher electron affinity, है ना? Agree with me, this part, you understood? For example, sodium ले लो, sodium 1, sodium 1, lower electron affinity. It will lose the electron, becomes positively charged. Yes or no? Higher electron affinity. Chlorine देखो, chlorine उसमें 7 है. It will gain electron. है कि नहीं? Higher electron affinity. Understand? Any doubt? Please ask. Yes. No doubt, sir. If this is very general, lower electron affinity, definitely it will lose electron, and higher electron affinity means it will gain electron. Agree no? Chemistry में पता है आपको? Yes. Shall I go to the next page? Yes, sir. Okay. Right. Next page. What is meant by electrification? Electrification. Yes, what is meant by electrification, Ray? Do you know? What is electrification? Bolo bolo. The process of giving charge to a body. Yes, the process of giving charge to a body is called electrification. Now, how many processes are there? You see here. First process I am taking, that is charging by friction. What is the first one? Charging by friction.
Yes. Now I will suggest you one experiment. What you do, plastic chair is there now. This is a plastic chair, okay? Listen. And whatever this is, okay, you can see this is a plastic chair and you are sitting here and your legs are down, okay? Got it? Something like this. Take a towel. This is a towel and this is another person, okay? And beat with towel to this plastic chair. Just beat to the chair slowly, okay? Fast also you can beat, but don't beat in such a way that that chair will break, okay? Slowly. And now this is the third friend. When he will touch this person, what will happen? You just see and tell me why it is happening like that, okay? Will you do? Will you do this? Yes, will you do? Can you hear me? सर could you repeat सर? हाँ एक बार फिर से repeat कर सकते हो सर? हाँ बिल्कुल. One person is sitting on chair, okay? This is plastic chair. And take a towel and just beat back of this chair with that towel. Fast. Frequency should be more, okay? And this is the third person. He will keep on beating, okay? He will keep on beating. And this is third person. When he touches this person who is sitting on the chair, what will happen or what he will experience, that you have to tell me, okay? There are three persons, means three persons are required for this experiment. Yes, very good, Aditya. Static electricity. But what will happen? You just experience and tell me. Huh? Will you do this at home? जोर का झटका जोर से लगा सर. आदित्य बोल रहा है झटका लगता है सर. कभी ट्राई किया आप लोगों ने? यस, हैव यू ट्राइड बिफोर? No sir. हाँ, एक बार ट्राई करो, ओके? यस. हाँ, बट इन स्मॉल क्वांटिटी ओनली. यस, जोर का झटका बोले तो सब लोग घर की लाइट चले जाने के बाद वही करते थे फिर. हाँ, लाइट चली गई, चलो रे खुर्ची पे बैठो, दो वायर लगा के इधर इधर लगाओ, बल्ब लग जाता था, ज्यादा करंट है तो. हाँ, है कि नहीं? तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत है? हाँ. ऑल विल बिकम आइंस्टाइन्स, ओके. तो ट्राई करो, ओके? देखो क्या होता है, एक्सपीरियंस तो करो. चलो आगे बढ़ेंगे. रेडी? हाँ. तो अब देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें हम क्या कर रहे हैं? This is nothing but we are charging any body by use of friction. So particularly if suppose I have taken a glass rod and silk cloth. ये glass rod है और ये silk cloth है, ओके? ये कुछ ऐसे है, silk cloth और ये glass rod. तो जब हम इन दोनों को रब करते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव इस ग्लास रॉड पे बनता है और ये निगेटिव किस पे बनता है? सिल्क क्लॉथ पे. इसका मतलब क्या है? what is the meaning of this? When we are rubbing glass rod with silk cloth,
silk cloth acquires negative charge or becomes negative charge, whereas glass rod becomes positively charged. What is the meaning of this? Yes, please tell me. Anyone? Yes. Can you tell me examples? Why it is so? Electrons are getting transferred from glass rod to silk rod. Very good. Yes, Amok. Excellent. See, already we have discussed the body who is losing electrons will become positively charged. Who will lose electron? Glass rod. Who will gain electron? Silk cloth. That's why silk cloth acquires negative charge and glass rod acquires positive charge. Got it? Yes. Here glass rod gains loses bolo. Glass rod loses electrons. Silk cloth gains electrons. Agree with me? Yes or no? Very good. Go doubt? Yes, any doubt? Good. Shall we move ahead? Yes. Shall we move ahead? Okay, let's move ahead. Now, next method, that is charging by conduction. Okay, second method is what? Charging by conduction. Charging by conduction. So tell me how charge will transfer now from here. Actual conduction takes place. है ना? What happens here? Actual conduction takes place. Actual conduction. चलो एक एग्जांपल देखेंगे. रेडी? अब देखो, मैंने क्या कर दिया समझो. एक अनचार्ज्ड बॉडी है, राइट? वेट, आई विल टेक rod type of structure. Let us suppose this is a body. Okay. This is uncharged body. Uncharged body. Uncharged body means what, Ray? What is meant by uncharged body? Yes. न्यूट्रल बॉडी है ना? न्यूट्रल बॉडी. यस. हाँ, यस. अब यहाँ पे जो आपको पिंक कलर की एक बॉडी दिख रही है, उसमें कुछ चार्ज है. लेट अस सपोज चार्ज इज Q. चार्ज कितना है इसमें? Q. और यहाँ पे कुछ भी नहीं है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टचिंग दिस टू बॉडीज. ये व्हाइट बॉडी जो है, ये जो पिंक कलर की बॉडी है, हम इसको टच करेंगे. ठीक है?
तो अब क्या होगा, यहाँ का जो चार्ज है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, है कि नहीं? यस। और सर अगर समझो मैंने इन दोनों को बाद कब तक ट्रांसफर होते रहेगा, कब तक? जब तक दोनों पे सेम चार्ज नहीं होता तब तक ट्रांसफर होते रहता है ना? इफ सपोज आई हैव सेपरेटेड, if suppose I have separated these two bodies, then क्या होता है, इस पे जो चार्ज था पहले, इस पे कितना था, इस पे Q था, इस पे 0। नाउ इस पे कितना आएगा, लेट अस अज्यूम दैट Q डैश, इसमें कितना आएगा Q डैश। तो ये जो Q डैश है ये कितना आएगा, 0 प्लस Q बाई 2। इस पे भी कितना आएगा, Q डैश इज इक्वल टू 0 प्लस Q बाई 2। तो ये कितना आएगा, Q डैश इज इक्वल टू Q बाई 2। इस पे भी कितना, Q डैश इज इक्वल टू Q बाई 2। अंडरस्टूड? सर Suppose now one more example I am taking. So in this way we can charge a body. If it is uncharged body is there, we can charge it by conduction. Okay, direct actual contact. Now next you see here, one more example I am taking. Suppose now we are having two spheres, sphere A, and this one, there is another sphere, that is sphere B. Okay, व्हाइट कलर का स्पेयर A है, येलो कलर का स्पेयर B है। नाउ A पे जो चार्ज है वो है Q1 और B पे जो चार्ज है वो है Q2। नाउ व्हाट वी डिड, वी हैव टच्ड देम टुगेदर। ये देखो, इन दोनों को टच किया और बाद में सेपरेट भी किया। टच करने के बाद ये अंडा क्यों बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके वो जैसा है वैसे रहेगा, नहीं तो स्पेयर का अंडा हो गया बोलोगे। हाँ देखो, नाउ आई एम सेपरेटिंग देम। Okay, so who will tell me what is the sphere charge on sphere A? What is the charge on sphere B? Yes, who will tell? Anyone? Q1 Please plus tell Q2 me. by 2. Very good. Q1 plus Q2 by 2. Yes, very good. तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, ये जो चार्ज बनेगा ये है Q डैश इज इक्वल टू Q1 plus Q2 divided by 2. Okay, and here also Q dash is equal to Q1 plus Q2 by 2. Understood? Clear है? Yes. Sir. And one more thing, अगर समझो निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, चलो दूसरे पेज पे देखते हैं। If suppose one sphere is having negative charge, one sphere is having positive charge, what will happen? बोलो बोलो, what will happen? Yes, tell me. न्यूट्रल तो नहीं बनेगा, बट आई एम नॉट सेइंग दैट सेम मैग्नीट्यूड। ओके, नॉट, डेफिनेटली नॉट द सेम मैग्नीट्यूड। गॉट इट? क्या होगा सोचो। चलो देखेंगे आगे। यस यस, we have to add them with their sign. Yes Lalit, with their sign, whatever it is. Let's move ahead and we will see that. First you note down this all. First you note down charging by conduction. Noted everyone? Done, sir.
Okay. Okay, let's move ahead. Now see here. Now, suppose one example I am giving you, solve. Try to solve this. Two spheres having charge or charges -5 coulomb and +9 coulomb are touched and separated. Find the charge on each sphere after separation. Find charge touched and separated. Find charge on each one. +2 coulombs. Yes, very good. Very good, right? +2 coulomb. Right. Yes. Good. तो देखो, अब मुझे बोलो इसमें रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। ये एक चार्ज, ये एक स्फीयर है। बाद में हम दोनों क्या किया, हमने इसको टच किया, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया है। यस, और बाद में इनको सेपरेट किया है कि नहीं? तो ये बोल रहा है अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा। सोचो, थोड़ा सा सोचो। अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा। हाँ? कौन बोलेगा? अट्रैक्ट। गायत्री बोल रहे अट्रैक्ट। Attract, ओके, sir. मणिकंठा रिपेल बोल रहा है, कौस्तुभ अट्रैक्ट बोल रहा है। रिपेल इज द राइट आंसर। रिपेल, यस। अब देखो, इसके बाद अगर हमने ये Q डैश फाइंड आउट किया तो क्या होगा? -5 + 9/2। ये भी -5 + 9/2। ये है Q डैश। तो अब क्या होगा? बोलो 9 - 5 4 बाई कितना होगा? 4/2 +2 कूलम। इधर भी कितना? +2 कूलम। तो ये देखो, ये सेम थिंग है। ये क्या है रे? इट इज लाइक डिवोर्स, है ना? ये क्या है? डिवोर्स है। डिवोर्स होने के बाद प्रॉपर्टी आधी आधी होती है ना? हाँ? और बाद में रिपेल करते हैं, है कि नहीं, एक दूसरे को? ये वही है ना? यस। हाँ? ओके, तो चलो, तो फिजिक्स इज तो जोक्स अपार्ट, लीव इट। हाँ, तो यहाँ पे देखो आप, क्या है ये? +2 कूलम, यहाँ पे भी +2 कूलम आ रहा है, राइट? तो क्या मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूं यहाँ पे ऐसे? देखो मैं क्या नोट पॉइंट डाल रहा हूं, देखो। रिपल्शन और कंडक्शन प्रीसीड्स रिपल्शन। कंडक्शन प्रीसीड्स, क्या करता है कंडक्शन? बोलो। कंडक्शन प्रीसीड्स रिपल्शन। क्योंकि बाद में दोनों बॉडीज पे
सेम चार्ज होता है, आइदर वो निगेटिवली चार्ज हो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या तो मिक्स हो। अगर समझो -5 है, दोनों को टच किया, -5 -6 ले लो। एक और एग्जांपल समझो, अगर मैंने -5 और -10 कूलम इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, मतलब टच किया दोनों स्पेयर को, एक स्पेयर, तो बाद में क्या होगा, इधर आधा है कि नहीं? यस और नो? राइट। तो हमेशा आप देखो, जो दोनों चार्ज सेपरेट होने के बाद हमेशा उनपे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रहता है, इक्वल मैग्नीट्यूड इन द सेंस आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई कंडक्शन प्रीसीड्स ऑलवेज रिपल्शन, कंडक्शन प्रीसीड्स ऑलवेज रिपल्शन। तो और एक प्रॉपर्टी हमें, प्रॉपर्टीज में हम फिर से पढ़ेंगे आगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अभी हमें एक पता चला कि लाइक चार्जेस repel, unlike charges attract. Again ahead we will see that in the properties of charges, no need to write now, but just ध्यान में रखो। okay, clear है? any doubt? Clear, sir. good, No doubt, sir. okay, right। तो अब देखो दूसरा जो है, sometimes they are asking like this question for 2 marks। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, sometimes they are asking for 2 marks, why repulsion is sure test of electrification? Why repulsion is sure test of electrification? तो उसका आंसर क्या होगा, देखो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या करती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी attracts both negatively charged body and न्यूट्रल बॉडी, है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करती है, निगेटिवली चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है और न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है, एंड देयरफॉर hence repel, but or else if you want you can increase here, but repels positively charged body hence repulsion is sure test of electrification. Understand? ठीक है, sure test of electrification. Clear? Yes, sir. Repels only करो इसको, only positively charged body. क्योंकि अगर हमने कोई भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी नियर लाएंगे, यस, ये देखो, और एक बार समझो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली है और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करती है, इसको अट्रैक्ट करती है ना। अगर दूसरी बार समझो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है, फिर भी अट्रैक्ट करती है, लेकिन
अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और दूसरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये इसको रिपेल करेगी। तो हमें डिटेक्ट करने में पता चलता है, डिटेक्ट करने में इजी हो जाता है ना कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव है और कौन सी निगेटिव है। इन दोनों में से तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हमें ना पता चलेगा ये निगेटिव है या तो न्यूट्रल है, हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए अगर रिपल्शन हुआ तो समझ सकते हैं हाँ ये पॉजिटिव है। अगर निगेटिवली बॉडी है तो उसके साथ अगर रिपल हो रही निगेटिव बॉडी तो हम बोल सकते हैं यस। दैट्स व्हाई repulsion is the sure test of electrification. Got it? Yes, sir. Yes, now you understood everyone. Yes, sir. Any doubt? No doubt, sir. Understood, sir. Lalit, you understood now? Understood, sir. Good boy. तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, आदित्य को बहुत भूख लगी है जोर की। यस ना? हमको भी लग रही है सर। हाँ ओके, चलो मुझे खा जाओ, एक आधा गटक जाओ मुझे एक बार। नो सर, नो सर। चलो, लेट्स स्टॉप हियर। ओके, बाय। बाय सर।